That is, the object should be different. The object should be, all objects should be distinguishable, right? Now, how is this permutation working? So this symbol is NPR or P in within bracket n comma r. Okay. Here n should be a whole number, r should be an integer, which is less than or equal to n. So NPR is only defined when r is either less than or equal to n. So अगर आप बोलते हो 10p11, this is meaningless. ये कुछ नहीं बनेगा. Now NPR open कैसे होगा? n factorial divided by n minus r factorial, right? तो इसको समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है? ये बोल रहे हो कि NPR माने अगर आप लिखते हो 10p4, तो आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आप 4 का कॉम्बिनेशन बना के उनको अरेंज कर रहे हो. तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं. तो लेट्स से अभी वापस में आपको आप इसमें से कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फटाफट. यू हैव 2 minutes. If someone is writing, then please raise your hand so that I get to know whether I have to stop or proceed. Okay, cool. So let's come to the whiteboard. So what I'm saying is NPR क्या होता है? तो let's say मैंने लिखा 10p4 और 10c4. चलिए इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. तो मेरे पास लेट्स से क्लास में कोई 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. कल भी मैंने ये एग्जांपल लिया था. इन 10 स्टूडेंट्स में से मेरे को 4 लोगों की एक कमेटी बनानी है. फोर स्टूडेंट्स की कमेटी बनानी है. तो मैं क्या करूंगा? मैं सीधा सीधा 10 में से 4 के कॉम्बिनेशन देख लूंगा कितने बनेंगे, विच आर 10c4. बट अभी इस सिचुएशन को ध्यान से समझना. यहां पे कॉम्बिनेशन का मतलब है, लेट्स से आप इन 10 स्टूडेंट्स में से कोई 4 स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया. ऐसे ही टोटल कितने बनेंगे? 10c4 बनेंगे. 10c4 की वैल्यू 210 आएगी. तो 210 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर 10 स्टूडेंट्स हैं आपके पास और आप 4 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं. तो देयर आर 210 स्टूडेंट्स, देयर आर 210 ways to form a committee of 4 students. Right. So there are 210 ways to form a committee of 4 students. जिसमें से एक कॉम्बिनेशन, there will be one combination of A, B, C, D, first 4 students. In 210 के अंदर से ही this is one combination. Okay. But let's understand what is the difference between combination and arrangements or permutation. Combination तो A, B, C, D का एक ही बनेगा. But if I talk about arrangements, तो अरेंजमेंट में ये मैटर करता है कि 4 स्टूडेंट्स में से कौन पहले कौन बाद में. सो लेट्स मेक अनदर सिचुएशन जिसमें ये जो 4 स्टूडेंट्स की कमेटी है, इनके लिए हमने 4 चेयर रखी हुई. देयर आर 4 चेयर्स फॉर दिस कमिटी इन विच दीज स्टूडेंट्स हैव टू सिट. अगर इन स्टूडेंट्स को इस चेयर पे बैठना है तो एक कॉम्बिनेशन था ए बी सी डी. कॉम्बिनेशन तो ये एक ही है, बट अगर मैं इनको सीट पे बैठाना चाहूं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और भी बहुत. These are arrangements. So a same combination can produce different types of arrangements. But when do this concept arise? When do we think about arrangement? जब भी हम लोगों को ऑर्डर से मतलब होगा. ऑर्डर माने के आप उनको देखना चाहते हैं, आप उनको you want to I mean this matters, like who is coming on first, who is coming on second, who is coming on third, who is coming on fourth. So if these are seats, if these are chairs,
ABCD is a different arrangement. ACBD will look differently than ABCD will look. So if they look different, that is a different permutation. That is a different arrangement, right? That's the basic difference between combination and arrangements. कॉम्बिनेशन में ABCD अब एक बन चुका है, अरेंजमेंट में ABCD कैसे बैठे हैं या कैसे हाउ दे आर लुकिंग इफ यू सी देम, वो मैटर करता है. तो अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में तब मैटर करेगा जब आप कोई नंबर बना रहे हो, क्योंकि 7, 8, 9 इन 3 डिजिट को यूज करते हुए आप 789 भी बना सकते हो, आप 987 भी बना सकते हो, आप 978 भी बना सकते हो. तो जब भी आप कोई नंबर बना रहे हो तो अरेंजमेंट मैटर करेगा. जब भी आप लोगों को सीट पे बैठाना चाहते हैं, जब व्हेन सम पीपल आर सिटिंग इन एन अरेंजमेंट, तब भी ये मैटर करेगा. इस तरीके से आपको देखते रहना पड़ेगा कि क्या हमें ये देखने की जरूरत है कि लोग दिख कैसे रहे हैं, लोग बैठे हुए कैसे दिखेंगे, राइट? सो ट्राई टू थिंक इन दैट टर्म्स. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. या वापस पहले तो थोड़ा सा उस पे आते हैं. जस्ट अ मिनट. ठीक है, ये सेकंड आपके पास स्लाइड नहीं, फर्स्ट ईयर. ठीक है, सेकंड स्लाइड में आ जाते जरा. यहाँ पे आपको यही बताया गया कि अरेंजमेंट्स ऑफ, ये 2 सेंटेंस फटाफट से सभी लोग लिख लीजिए, 2 पॉइंटर्स हैं, फर्स्ट 2 पॉइंटर्स. अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम. तो लेट्स से मैं आपसे कहता हूं 10 लोग हैं, 4 लोगों को चेयर पे बैठाना है, तो आप आंसर देंगे कितने तरीके हैं? 10p4. नाउ व्हाई 10p4? क्योंकि अगर हम चेयर पे बैठाते हैं तो ये मैटर करेगा कौन पहले बैठा है, कौन बाद में बैठा है. तो अरेंजमेंट्स होंगे 10p4. बट लेट्स से 4 चेयर की जगह 10 चेयर्स होती है हमारे पास. वी हैव 10 चेयर्स एंड 10 पीपल. So we have to make 10 people sit on 10 chairs. So what should be the answer? 10p10. Now the npn is n factorial. We have already written this. What is npn? Npn is n factorial. So if you are calculating 10p10, that would be 10 factorial. आप इसका यूज समझ लीजिए मेरे साथ फटाक से, बहुत ही शॉर्टकट में हम वी आर गोना यूज दिस. I'll make you understand with one example, but first you guys write these first 2 pointers. And you can we proceed? कोई लिख रहा है तो please raise your hand. ठीक है, तो क्वेश्चन है, in how many ways हाँ जी आंसर बताएंगे. In how many ways can 5 persons sit on 2 chairs? 2 चेयर है, 5 लोग हैं. Now see, the arrangement matters. Sit on chairs. Sitting arrangement है. This is clearly an arrangement, not just combination. So what should be the answer? 5 persons, 2 chairs. 5p2, simple, na? Yes, Tariq, correct. Yeah, Fahad, correct. 5p2. The answer should be 5p2 because there are 5 persons and there are 2 chairs. So you have to arrange 5 persons taken 2 at a time. आपको 5 persons को अरेंज करना है 2 चेयर्स पे,
तो बेसिकली आपको पहले 5 में से 2 पर्सन चाहिए और फिर उन दोनों को अरेंज करने का है। तो आप सिंपल 5p2 इससे कर सकते हैं। बट अगर मैं यहीं पे लिखता 5 चेयर्स, 5 पर्सन्स 5 चेयर्स, तो सिंपल आंसर तो हो जाता 5p5। बट आप ऐसे मत करो इसको 5p5 लिख के, 5 पर्सन है, 5 ही चेयर है, तो सीधा 5 फैक्टोरियल जितने ऑब्जेक्ट्स। यस तारीफ, करेक्ट। बट लिसन टू दिस, व्हाट आई एम सेइंग इज, जितने ऑब्जेक्ट्स अगर उतने ही प्लेसेस टू फिल है, जैसे 5 पर्सन और 5 ही चेयर्स थे, 5 ही ऑब्जेक्ट्स थे आपके पास, एंड देयर वर 5 प्लेसेस टू अरेंज देम। तो अगर आपके दोनों नंबर सेम है तो डायरेक्टली फैक्टोरियल कर दीजिए उसका। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ए बी सी डी ई, यू हैव 5 लेटर्स एंड यू हैव टू मेक अ 5 लेटर वर्ड, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। ऐसे सीधा बस इंफॉर्मेशन लिखो फटाफट। देयर आर 5 डिजिट्स, सॉरी 5 लेटर्स, how many 5 letter words can be made? How many words can be made? पहला क्वेश्चन है 5 लेटर वर्ड आपको बताने हैं कितने बन सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है 3 लेटर वर्ड आपको बताने हैं कितने बन सकते हैं। Here we apply like repetition is not allowed, right? Yes, repetition is not allowed. Different. फाइव लेटर वर्ड, हाँ जी, कितना होगा? 5 लेटर्स है और 5 ही प्लेस पे फिल करना है इनको। ऐसे देखो ना, देयर आर 5 लेटर्स एंड यू हैव टू फिल 5 प्लेसेस out of these 5 letters, so it should be direct 5 factorial. but अगर आपसे पूछा गया 3 letter word, then 5 letters 3 places to fill 5p3, right? that is how this will proceed. अब एक बार फटाफट से इसको नंबर ऑफ चॉइसेस से भी देख लेते हैं। पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, 5 persons we have to make 5 persons sit on 2 chairs, तो 2 chairs बोले तो ऐसे हम 2 places देख सकते हैं। फर्स्ट चेयर के पास 5 चॉइसेस है, सेकंड पेयर के पास 4, सेकंड चेयर के पास 4 चॉइसेस है। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 20। यहां से भी देख लो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इसको आंसर 20 आएगा। अगले वाले में 5 प्लेसेस है, यानी कि 5 चेयर्स हैं, एंड यू हैव टू मेक 5 पीपल सिट ऑन देम। फर्स्ट के पास 5 चॉइस, सेकंड के पास 4, थर्ड के पास 3, फोर्थ के पास 2 और लास्ट के पास सिर्फ एक चॉइस बचेगी। अगर आप नंबर ऑफ चॉइसेस से जाएंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा जो पहले केसेस में आ रहा था। तो आपने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखा था बेसिकली, वो कुछ कुछ परम्यूटेशन जैसा ही था, वो बिल्कुल परम्यूटेशन जैसे ही था। अगर आप 5 लेटर वर्ड से सॉरी 5 लेटर से 5 लेटर वर्ड बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सेम, 5 पोजीशंस हैं, 5 प्लेसेस हैं और 5 ही चॉइसेस हैं टू फिल देम। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो परम्यूटेशन लगा सकते हैं। अगर रिपीटिशन अलाउड होती तो नंबर ऑफ चॉइसेस से ही सॉल्व करना पड़ता, फिर पहले प्लेस के लिए भी 5 चॉइस होती, सेकंड के लिए भी 5, थर्ड के लिए भी 5, फोर्थ के लिए भी 5, फिफ्थ के लिए भी 5। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल पूछ सकते हैं, कहीं भी डाउट है तो। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये हुई कि अगर आपको अरेंजमेंट करना है तो आप एनपीआर यूज करिए। अगर एन और आर दोनों सेम है, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ही प्लेसेस टू फिल है, तो सीधा फैक्टोरियल कर दीजिए। और अगर ऑब्जेक्ट्स ज्यादा है, प्लेस फिल करने वाले कम है, तो एनपीआर का यूज कर लीजिए।
या फिर आप नंबर ऑफ चॉइसेस से भी जा सकते हैं, वो दैट इज ऑल्सो द सेम मेथड एज योर परम्यूटेशन इज, राइट? ओके। अब यहाँ पे आपको 2-3 रूल्स नए जो सीखने हैं वो उसकी बात कर लेते हैं जरा। तो लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ, चलिए पहले तो फटाफट एक बार बात बात को समझ लेते हैं। मैंने आपको बोला कि ये लिख लिया सभी लोगों ने, कोई बचा है तो बता दीजिए। Okay, write down the next question, everyone. How many five-letter words? How many five-letter words? How many five-letter words can be made? How many five-letter words can be made using the letters of the word? Using the letters of the word prime, P-R-I-N, prime. हाँ जी, आप इसका आंसर देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। So is it 5p5? 5p5, or suppose we can directly say this 5 factorial. Use 5 this. factorial, which is 120. Yeah, which is 120. तो हमसे पूछा गया कितने टोटल वर्ड्स बन सकते हैं इसके लेटर्स को यूज करते हुए, तो देयर आर 5 ऑब्जेक्ट्स, यानी कि 5 लेटर्स which need to be arranged on 5 places. So directly 5 factorial. Total words प्राइम से 5 factorial 120 बन जाएंगे, राइट? बट व्हाट इफ, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट कर दीजिए। फर्स्ट में मैंने आपको वर्ड दिया है प्राइम, सेकंड पार्ट में वर्ड में आपको दे रहा हूं फहद। तो बेसिकली हमें इन 5 लेटर्स को ही आपस में अरेंज करना था। जैसे यहां पे भी तो 5 लेटर्स को अरेंज करा था, 5 लेटर्स 5 प्लेसेस, तो कर दिया सीधा 5 फैक्टोरियल। 6 लेटर्स 6 प्लेसेस, 6 फैक्टोरियल। बट प्रॉब्लम फहद में क्या है कि देयर इज अ लेटर ए which is being repeated. The frequency is not 1, the frequency is 2. For A, the frequency is 2 because A has come twice in this word. So what if the objects are not distinct? In these cases, जब हमारे पास objects distinct नहीं होंगे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे निकल रहे होंगे? आप सिंपल 5 से बनाना चाहते हो तो 5 फैक्टोरियल बनना चाहिए था। 5 लेटर वर्ड आप बनाना चाहते हैं, 5 ही लेटर्स आपके पास हैं, तो बनने चाहिए थे टोटल 5 फैक्टोरियल्स। बट व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज दैट ए हैज कम ट्वाइस। तो जो भी रिपीटिशन हो रहा है और जितनी बार भी हो रहा है, तो ए हुआ 2 बार हुआ, तो 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। फिर से एक बार, अब की बार मैं थोड़ा दूसरा वर्ड दे रहा हूं, मैथमेटिक्स। मैं जानना चाहता हूं मैथमेटिक्स वर्ड से टोटल कितने, मतलब मैथमेटिक्स में जो लेटर्स यूज हुए हैं उनसे टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं? जितने भी लेटर का जितने भी लेटर्स का ये वर्ड है उतने का ही बनाना है, पर कितने टोटल बन सकते हैं? तो सबसे पहले तो मुझे ये गिन लेना चाहिए कि कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। ए, उसके बाद टी,
उसके बाद m, क्या कोई और भी रिपीट हो रहा है? ICSHE, नो। तो सबसे पहले मुझे इसका टोटल काउंट निकालना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स हैं। अगर ये 11 के 11 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते तो इनके टोटल अरेंजमेंट्स हो जाते 11 फैक्टोरियल, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट डिफरेंट। तो पहले तो मैं इनको डिफरेंट मानते हुए टोटल अरेंजमेंट्स लिख दूंगा। 11 थे तो 11 का टोटल अरेंजमेंट बनता है 11 फैक्टोरियल। अब बट इसके अंदर कुछ लेटर्स हुए रिपीट। कौन कौन से लेटर्स? ए 2 बार रिपीट हुआ, तो जो लेटर जितनी बार भी रिपीटिशन चल रहा है उस फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाइए। ए 2 बार रिपीट हुआ 2 फैक्टोरियल, टी 2 बार रिपीट हुआ तो इसका भी 2 फैक्टोरियल, एम 2 बार रिपीट हुआ तो इसका भी 2 फैक्टोरियल। तो लेट्स से मेरे को बोला गया भैया इसके टोटल अरेंजमेंट्स बता दो। हाँ जी, हरीफ बताएगा टोटल अरेंजमेंट्स इस बार। यस सर। प्लीज ट्राई। फादर में पूरा आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मे भी तेरा करेक्ट हो मे भी ना हो, मेरे को नहीं पता, बट इतना आंसर ही बस हम दे के छोड़ सकते हैं। थर्ड वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप कभी भी यहाँ पे सॉल्व करने मत जाइएगा, बस आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। सर इज इट 9 फैक्टर बाय 3 फैक्टर 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल? या 9 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट्स अगर सारे डिफरेंट होते तो डिवाइडेड बाय a is repeating 3 times so 3 factorial, b is 4 times तो 4 factorial into 2 factorial. So the concept is जब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो, when objects are identical, if objects are identical, divide by frequency of object का फैक्टोरियल। जितनी बार भी वो आया है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते चले जाओ। पहला रूल तो ये। ठीक है जी, चलिए जरा आगे बढ़ें। तो एक दो क्वेश्चन का आंसर कर दो सबसे पहले। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 4, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of first
Barnable. Total number of arrangements for Barnable. Second is both are the same words. Actually, not same. This is the correct word, but I want you to find out the arrangement for this as well. Just tell me the answers in terms of factorial only. So you want the answer in terms of factorial. Yeah. You don't need to solve the full answer. No, Tharif. First one is not. And the second one is also. This is incorrect for both of them. So for your first one, is it like 9 factorial by 3 factorial into 2 factorial? Correct. For the second one, should I answer? So Yes, please. is 8 factorial by 2 factorial into 2 factorial? B, E, yeah. 2 Correct. is. Yeah, correct. Okay, so this is the first rule. If you need to arrange identical objects, you can arrange them, but you also need to divide by the frequency of object factorial. However times the number is, the digit is, the letter is repeating, the object is repeating, you have to divide by the factorial of its frequency to the whole value. Okay, now coming to the second rule. Sometimes होगा क्या कि let's say let's take this first example only. किसी का नाम तुम्हारा नहीं, ठीक है, मेरा ही नाम दिया जा सकता है. Okay, cool. Now can I remove this? तो फर्स्ट टाइम मैंने पूछा था टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. एक सेकेंड. Yeah, let's take this. Not trying. Let's take coding. So if I just simply ask the total number of arrangements of this word, what would be the answer? Yes. What should be the answer? If I ask you the total number of arrangements of this word, coding, what's the answer? 7 factorial. Yes, 7 factorial, right? Because there is no letter repeating. You just have to simply arrange them. You have 7 objects and on exactly 7 places. तो अगर आप किसी भी वर्ड के लेटर्स अरेंज करना चाहते हो, सिंपल जस्ट टेक द फैक्टोरियल. If the numbers, if the letters are repeating, you have to simply divide that by the frequency factorial. But now what I'm doing is I'm putting
two conditions. These are two methods actually. This first one is band method and this second one is gap method. So first one, what we are saying is okay, the first one always comes together. What we are saying is we want two letters to be together always. So that is why this is band method. बैंड मेथड यार फ्रेंडशिप बैंड नहीं देते थे बचपन में, वो वाला बैंड. बैंड मेथड मतलब ये दोस्त हैं, we can't separate them. We have to put a band on these objects. Now how the band will be working, I'll make you understand. But first you have to understand what is going on, like what is the concept. So we have to always take some objects with each other. They should always come together. So for example, what we are saying in this first question is that we have this word Kodinya, okay, and we want to make all the possible words out of these letters in which I and N will always be together. So for example, this can be a favorable condition. What I'm writing is this is a favorable condition. K-O-Y-N-I, K-O-Y-N-I-A-D. This is a favorable condition. Why? Because see, I and N are together. So I and N will always be together. There will be no letter coming in between them. This would not be a favorable situation. K-O-I-D-N-Y. No, this is not favorable because I or N ke beech mein there is a letter D, which should not be there. I and N will always be together. It doesn't matter whether I is coming first or N is coming first. I can come first or N can come first, just like this. But N and I should always be together. There should be no letter coming in between them. That is why this is known as band method. प्यार का बंधन एकदम टूटना नहीं चाहिए. They always have to come together, right? So this is band method जहाँ पे हम we want some objects to be always together. Now the second is gap method. गैप माने तो इस बार हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमेशा अलग अलग रखना चाहते हैं. So what I'm saying is this is gap method. What we are saying is any two vowels do not come together. यानी कि हम चाहते हैं कोई भी दो vowels एक साथ ना आए. Now there how many vowels are involved in this? First is O, second is I, third is A. There are three vowels in this word and we do not want them to be together. We do not want any two of them together. For example, this is a perfect situation. Kodinya. In this, there are no two vowels which are together. There is a gap between O and I. There is a gap between I and A. There are letters between O and A as well. So this is a perfect situation to show you what I'm saying, to show you what the condition is. But if the situation is like this, see, this first word, this is not the right situation. No. O तो अलग है, but I और A एक साथ. We do not want this. We do not want any two vowels, either O and I, either O and A, or I and A,
to come together. So we always want a gap between any two vowels. We always want a gap between these two, between any two vowels. That is gap method. तो गैप मेथड में हमें सबके बीच में गैप चाहिए और बैंड मेथड में हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक साथ चाहिए. गैप मेथड में हमें गैप इंट्रोड्यूस करना है, बैंड मेथड में हमें हमेशा ऑब्जेक्ट्स एक साथ चाहिए. Now let's first understand band method. Band method is very easy to understand. तो बैंड कैसा है? बैंड ये एक बैंड है, कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हम बंद कर देंगे, बैंड के बैंड लगा देंगे. Now how this situation is working? हमें बोला गया है I and N should always come together. जो ऑब्जेक्ट्स भी हमेशा एक साथ आएंगे, the objects which you want always which you want to come together always, they should be put in a box. So let's put I and N in a box for now. And let's count other letters which are left. So K, O, D, and then Y, A. There are 7 letters in which you want these 2 letters to be always together. And there are 5 other letters as well. जिन ऑब्जेक्ट्स को भी एक साथ चाहते हो, put a band and consider them as a single object. Now, these were 2 letters, these were 2 objects, but you have to consider them as a single object for your calculation purpose. Why? क्योंकि हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमेशा एक साथ रखना चाहते हैं, तो ये दोनों चिपक के रहेंगे हमेशा. They will be stick to each other. They will always stick to each other. So what is these number of objects have become one object for us, right? So there were 7 objects before, but now there are only 6 objects. 1, 2, 3, 4, 5, and this is 1. So there are total 6 objects which needs to be arranged. The arrangement of 6 objects is 6 factorial. And then जो आपने बैंड लगाया था, उस बैंड के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी आपस में अरेंजमेंट्स हो सकता है. तो हम ये तो कह रहे हैं कि I और N एक साथ आना चाहिए, बट हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि I पहले आएगा और N बाद में आएगा. I भी पहले हो सकता है, N भी पहले हो सकता है. तो they both can arrange within themselves, but not with K, O, D, Y, A, not with other letters. So the objects which are together, they will be considered as one object, and then the arrangement will be you have to find the arrangement of total letters considering them as a single object, but then you have to arrange them as well. So this is 2 factorial, the arrangement of I and N within itself. अभी इसे मैं थर्ड प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा, वहां से आपको एक बार और समझ आ जाएगा. तो टोटल जो हमारे पास अरेंजमेंट्स होंगे वो इतने होंगे, जहां पे I and N will always be together. Okay, let's introduce one more question. Question number 3. You write this. I am introducing another question. अगर किसी को ये समझ आ गया है तो वो मेरे को थर्ड क्वेश्चन का आंसर भेज सकते हैं, अदरवाइज मेरे साथ तो सॉल्व करना ही है. We have 30 seconds to note down this and to think about this situation. In third, we want all the vowels together. Fahad, will you make me understand this third situation? All the vowels are together. How should we proceed? What do we want?
क्यों फहद, आवाज आ रही है? Sir, 1 minute. Yes. The Yeah. vowels were similar, then we wouldn't multiply them like into 2 factorial like in the previous question. Yeah. If the words would have been similar, then there would have been no question about their arrangements. If these Yeah. two words are I and I, we can't arrange them because they both are similar. So Yeah. like how sorry, but Yeah. similar words when they have similar frequencies, for example, if there are 2 i's in normal case we divide it by 2 factorial, so would be over here also divided by 2 factorial if it was I and I instead of I and N? No, in that case we would not have been divided this by 2 factorial. If these are I and I, then this is one letter. 1 2 3 4 5 6 factorial. If you want to divide this by 2 factorial, तो आप इसको 2 factorial से आप सिर्फ इसको अरेंज कर रहे हो, बट वो दोनों ही सेम भी होते। तो अगर आप करते उस केस में तो आप ऐसे कर सकते थे या तो आप यहीं पे छोड़ दो आंसर को, क्योंकि आपने 6 फैक्टोरियल अरेंज कर दिया और इन दोनों का अरेंजमेंट हो नहीं सकता क्योंकि दोनों आई एंड आई है। दैट इज वन वे टू थिंक अबाउट दिस, ओके। बट इफ यू वांट टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको इस तरीके से सोचना होगा कि ओके देयर आर 6 ऑब्जेक्ट्स, द अरेंजमेंट इज 6 फैक्टोरियल। नाउ आई विल अरेंज बोथ ऑफ दीज आईज which should be 2 factorial, but both of these i's are I mean both of these are i's, so I also need to divide it by 2 factorial. That is also 1, basically 2 factorial upon 2 factorial is 1. Okay, sir. But हाँ, अगर बाहर I होता, right? Yeah. No. What I'm saying is yeah, this अगर बाहर A होता, let's say, और अभी ऐसा कुछ लिखा होता, तो क्या करते? बता, आंसर बता इसका। Factorial by 2 factorial. 7 factorial पहले थे, 5 sorry, oh, yeah, 3 3 sorry, 6 7 factorial, sorry. yes, 7 factorial. 7 factorial by 2 factorial. But sir, about this concept of 6 factorial into 2 factorial by 2 factorial, we wouldn't consider it, right? It would be 1. Yeah. Yes. So we just ignore it. No. We will consider this frequency, na? Yeah, but not the other frequency if the vowels were similar. Yeah. If I would have been there, then it would have been 1. But if this is the question, INKODYAA, so this would have been 7 factorial divided. Yeah, into 2 factorial. Into 2 factorial by 2 factorial. No, not by 2 factorial. Sir, You just have to divide this. You just have to divide this by once, no? Once by 2 factorial. Sir, there are 2 A's. That's why it's 2 factorial. So this 2 factorial is for 2 A's. Yeah, only that, sir. No other 2 factorial. Yeah. Good. हाँ जी फहद, आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। बैक टू थर्ड क्वेश्चन। All the vowels are together. Fahad, you're not audible. Sir, am I audible? हाँ, अभी audible है, बता। So 1 2 3 4 5 factorial into 3 factorial. Correct. All the vowels are together माने A, O, I are 3 vowels. We want them to be together always. So we'll consider them as 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 objects which needs to be arranged, in which no one is repeating, right? This is 1, this is 2, 3, 4, 5. These all are different. These all 5 are different. So 5 factorial into the arrangement of A, O, and I within itself. That is 3 factorial. So band method is pretty simple. बैंड मेथड के अंदर अगर ऑब्जेक्ट्स रिपीट भी होते हैं तो रिपीटिशन वाला कॉन्सेप्ट बैंड मेथड के साथ कंबाइन कर दो, जैसे आपने सीखा है बिल्कुल वैसे ही कंबाइन होगा, नो वरीज। रिपीट करता है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड तो करेंगे, राइट?
अभी एक दो क्वेश्चन करके और पता चल जाएगा उसके बारे में भी, अभी और क्वेश्चन दूंगा मैं इस पे, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन नाउ. All the vowels, sorry, any two vowels do not come together. कोई भी दो vowels एक साथ नहीं है, कोई भी दो. So it means that we need a gap between any two vowels. Now how can we introduce these gaps? So first divide the question into two parts. Hanji, can I proceed? Is someone writing? If someone is writing, please raise your hand so that I get to know. I'll stop. Okay, everybody has written everything. I'm about to remove this. Cool. So I have this word Kodinya. Now, what is the problem? A, I, O, K, D, N, Y. K, O, D, I, N, Y. Yeah. So I have these four consonants and these three vowels. What do I want is, I do not want any two vowels to be together. That is, I want a gap between A and I. I want a gap between A and O. I want a gap between I and O. Now, how can I do this? So just divide your objects into two parts, first of all. The objects in which gap needs to be introduced. Gap needs to be introduced in between them. And these are the gaps. These are simply gaps because they will act like gaps. If K is in between A and I, there is a gap between A and I. If D is in between I and O, then there is a gap between I and O. If N is in between A and O, there is a gap between A and O. Right? So these are gaps and these are the objects in which gap needs to be introduced. So divide your question into two parts. Objects, between them gap will be introduced, and objects which will be acting like gaps. यानी कि objects on which there is no condition applied. Gaps जो भी बनेगा, यानी कि जो भी objects जिन पे कोई condition apply नहीं हुई है, these objects are known as gaps. Right? तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है? जो भी गैप्स हैं आप सबसे पहले उनको लिख लीजिए. राइट? और इन गैप्स के अराउंड गैप्स देखिए, तो के इधर एक गैप, यहां पे एक गैप, डी और एन के बीच में एक गैप, एन और वाई के बीच में एक गैप, वाई के इधर एक जगह. आप अपने गैप्स को लिखिए और उसके अराउंड प्लेसेस देख लीजिए सारे. तो अगर के डी एन वाई को मैं रखता हूं, तो मैंने के का लेफ्ट साइड, के का राइट साइड, डी का लेफ्ट साइड, डी का राइट साइड, एन का लेफ्ट साइड, एन का राइट साइड, वाई का लेफ्ट साइड, वाई का राइट साइड, ये सारे ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से इसके साथ साथ ये प्लेसेस बना लिए. देयर कांट बी मोर प्लेसेस इन बिटवीन देम. नहीं, मतलब ऐसे नहीं करना है कि किसी भी दो लेटर्स के बीच में दो प्लेस है, नहीं, हर लेटर के बीच में एक ही प्लेस है. तो गैप्स को लिखो और ऐसे करके प्लेसेस बना लो. मैक्सिमम प्लेसेस हमेशा जितने भी गैप्स होंगे उससे एक ज्यादा बनेंगे. तो अगर यहाँ पे 10 गैप्स के ऑब्जेक्ट्स होते तो 11 प्लेसेस बन जाते. हमेशा इतने बनेंगे जैसे मैं बता रहा हूं. तो 4 थे तो देखो 5 बन गए. इन 5 जगह में आप अपने लेटर्स को जिन पे कंडीशन लगी हुई है उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दीजिए. तो कैसे होगा? 5 आपके पास प्लेसेस टू फिल है और 3 आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको फिल करना है. तो 5p3 5p3 इनटू 4 फैक्टोरियल, इनका आपस में अरेंजमेंट है. So this is the arrangement of vowels. And this is the arrangement of consonants.
चलिए फोर्थ क्वेश्चन। Any two consonants are not together. कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, यानी कि कंडीशन इस बार जो लगी है वो कॉन्सोनेंट्स पे लगी है। तो कंडीशन किस पे नहीं लगी है? वोवेल्स पे नहीं लगी है। तो फिर से आप दो हिस्सों में बांट दीजिए। KDNY इस पे कंडीशन लगी है और AIO पे कंडीशन नहीं लगी है, यानी कि ये गैप्स है। तो इसके अराउंड प्लेसेस निकालिए। देयर आर 4 प्लेसेस एंड 4 ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्टली अगर मैं इसको करूं सॉल्व, तो 4 को 4 पे अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल फॉर दीज वोवेल्स। ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, जरूरी थोड़े AIO ही लिखा हो, IAO भी हो सकता है। What are the OAI gaps in this case? सॉरी, The gaps. gaps are these There are 3 vowels. gaps, right? No, there are 4 gaps. I mean, sorry, there are 3 gaps in terms of But letters. there will be 4 places. There will be 4 places to be filled. Yeah. Okay. So you need to create the places around gaps. Basically, I have just named them. These are not gaps exactly, but the question, the formulation of the question was something like we have to divide these objects into 2 parts. So I have just given the name to these 2 parts by understanding the whole situation, that there are objects in which gap needs to be introduced, and then there are objects which will be acting like gaps. We have to start the question with the objects that will be acting like gaps, and then we have to make places around them. Like we have to find how these gaps can be used. So there can be 5 places to be filled around these gaps in the first part. But in the second part, when any two consonants are not together, there are 3 gaps. So there will be 4 places around them which need to be filled with 4 objects only. So 4 places, 4 objects, 4p4, yani ke 4 factorial into 3 factorial for the arrangement of vowels. So guys, do you understand these two situations? If you have any doubt, please feel free to ask. Okay, please write them and come to page number 146 in your NCERT, page number 146. Solve example 14, 15, 16 with me right now. And please don't look out for answers. I don't have a problem if you are not able to answer them correctly. There's not at all a single problem. So I'll be only having problem if you're not able to focus on concepts, not about the questions and not about the answers of the questions. So just try to learn the concepts. This is your first class on permutation. Don't worry about the answer. We'll get to the answers eventually. Just learn the concept for now. So solve these questions khud se and ask me anything which you are facing in problem. And everybody has written this. Cool. तो 14th में हमें वर्ड दिया है डॉटर. DAUGHTER. The word is daughter. And first case is all vowels occur together.
What method should we apply? All vowels occur together. Yanji, what should be the method? मेरे ऐसी क्या बात है? बता दो, तो आसान क्वेश्चन है. Harif, answer the first question. Guys, am I audible? Yes, sir, you are audible. Harif, you have to answer the first part. Yes, sir, I do. Whenever you solve, then answer. Sir, your voice is actually low, like it's a bit Okay. unclear. Okay. Actually, whenever you speak, any one of you speak, that the voice is breaking. So I don't know why it is happening. Just let me check my internet connection. Safa, is it clear now? I think my internet connection is working fine. Sir, Suresh is the answer for example 13 or example 14. Example 14, I guess, first part. Yeah, example Sir. 14, first part. This is the question. Okay, sir. So first part is all vowels occur together. If try this one with me, first part. Sir, What should I'm we do? about to solve it, sir. I got it. Okay. Don't tell me the answer, complete answer. Just tell me the answer in factorial. Yes, sir. Sir, I got the first answer as 6 factorial into 3 factorial. Correct. So we will put a band on these three, A, E, and U, because we want them to be together always. So this is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. There are total 6 objects. 6 factorial is the number of ways in which we can arrange them.
and then this should be multiplied with 3 factorial, because A, E, and U can arrange within themselves. So there will be total 6 factorial into 3 factorial number of ways. Now, second question. Safa, will you help me in this second question? Second question, sir. All vowels do not occur together. Sir, you are saying this like you want me to tell this in the way I know. Can I explain? Yeah. Please. The way I learned is that to find out is when all the vowels are like no. All 3 vowels should not occur together. The normal way, which is 8 factorial minus all when all the vowels do not occur together. So what I learned was like 8 factorial minus 6 factorial into 3 factorial. Correct. Safa, that is very correct. True. But I have a problem. What my problem is, let's understand this. Isn't this gap method? Yeah, sir, it is better. Okay. Just read the question again. Tell me a case. Tell me one case in which this condition is happening. Sorry. All vowels do not occur together. So like all A, U, and E should not come together like that. Yeah. So is daughter written correctly? Is daughter a case? What we want in second part is daughter a case representing that. Like A and U, they come one after the other. So it's not correct. So daughter is not the correct word according to you, right? Yeah, it's not correct. But what this condition is saying, this is saying that all vowels do not occur together. This is not saying any 2 vowels can't occur together. Safa, there is a difference between these 2 things. The difference is daughter is the correct word according to the second condition. But if we would have applied gap method, in that case daughter won't be a correct word. We want all vowels do not occur. We do not want any 2 vowels. Any 2 vowels can occur together, but all the 3 vowels can't occur together. That is the main differentiation between all vowels do not occur together and any 2 vowels do not occur together. Okay. In the case of any 2, we will apply gap method. But in the case of all vowels do not occur together, what we will do is we will take them, or we will take all of them together. We will find the total number of cases, and then we will subtract the condition of all objects together from the total number of cases. So there is a difference between gap method and all objects do not occur together. गैप मेथड तो ये चाहता है कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स भी एक साथ ना हो, बट जब हम बोलते हैं ऑल ऑब्जेक्ट्स एक साथ ना हो तो उसमें कोई 2 कोई 3 ऑब्जेक्ट्स एक साथ हो सकते हैं, सारे एक साथ नहीं होने चाहिए. Is it clear now? Yes, sir. Or see, if you would have applied gap method, the answer would have been different. Yeah, because that's for. Because the condition is different, right? So the answer should be different. तो उस केस में हम A, U और E को अपना वो मानते, एक कैटेगरी में डिवाइड करते, और D, G, H, T, R को एक कैटेगरी में डिवाइड करते, and then we would have find out the total gaps, total places around them, and then we would have solved. But in this case हम क्या करेंगे? Total arrangements. Yeah, you were correct. Total arrangements minus when all vowels are together. So answer would have been total arrangements are 8 factorial. We can arrange these 8 objects in 8 factorial ways, minus 6 factorial into 3 factorial are the number of ways in which these all vowels can be together. So we can solve that. Now we can write 8 factorial as 8 into 7
into 6 factorial. We can take 6 factorial common. This will become 56 minus 6, 50. This would have been the answer. I'm introducing another part to this question, third part, which is any two vowels do not occur together. This is gap method. They both were band method only. This was also band. This was also band. तो ध्यान रखना इस बात पे कि एनी टू बोला है या फिर ऑल बोला है. थर्ड वाला भी आंसर कर दो यार फटाफट. Guys, just one quick question. I have given you 8th and 9th from exercise 7.4 yesterday. Did you solve them? Or did you face any problem? If there's a problem, please ask me. If you have solved them, so I'll ask you 1-2 more questions on the same concept. Cool. Just answer this third part. Or any two vowels do not occur together. हाँ जी, बता दीजिए जरा क्या आंसर होगा. Anyone? You don't need to write on chat if you have solved this, though. You can also write the answer. I mean, you can also tell the answer directly. Safa, what should be the answer? The third part. Or I'm not sure. No, it's Like, okay. I can't understand the gaps over here. Okay. What are the objects in which gap needs to be introduced? You want gaps in vowels or consonants? First, identify this. Between the vowels, so that the vowels do not occur together. Between the vowels, no? So that vowels do not occur together, right? Yeah. So vowels are the objects in which gap needs to be introduced. Yeah. Am I correct? And what are the objects that will behave as gaps? E, G, H, T, R.
Yeah, consonants, right? So the objects which are acting like gaps, just write them. D, G, H, T, R. And then try to find out the places that these gaps are creating. Yeah. Now, how many places? 6. Yeah, always one more than the gaps. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can also make them like this. Now, at these 6 places, if you put any 3 vowels, right? If you put, let's take out any 3 place. चल बता कौन कौन से प्लेस लेने कोई भी ले ली 3. Let's take one this. हाँ यार, yeah, please. Between first is. Sir, can you hear me? Yeah, Safa, I can hear you. Like Please. first vowel can be between D and G. Let's write it A. And like between H or E. Yeah, E. ठीक है. E. Then between or the last one as well. ठीक है. E. Now see, if you put A, E, and U at any of these 3 places, any of these 6 places, what you will get is that there will never be any 2 vowels which will come together because there will always be gaps in between them. Yeah. तो इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं that categorize your all the objects into 2 parts. एक जिसमें गैप्स इंट्रोड्यूस करना है एंड एक जो गैप्स की तरह वर्क करेंगे. जो गैप्स की तरह वर्क करेंगे उनको लिख ले. लिखने के बाद फाइंड आउट द प्लेसेस दैट दे आर क्रिएटिंग. उन्हीं प्लेसेस पे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को फिक्स करेंगे. दैट इज हाउ गैप मेथड इज वर्किंग. तो ये तो मैंने बस इसलिए प्लेस सेलेक्ट कराए थे इससे क्योंकि जैसी प्लेस सेलेक्ट करने के बाद आप लेटर को रखोगे यू विल गेट टू नो कि हम क्यों ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं. अगर आप इसमें से कोई भी 3 प्लेसेस लेते हो तो हमेशा वोवेल्स के बीच में लेटर्स रहेंगे ही रहेंगे. तो ये these 6 places, in this at these 6 places we need to arrange 3 objects 6p3 into 5 factorial. Yes, that is the answer. Fahad, Tharif, did you understand this? How the gap method is working? Yes, sir, little. Okay. We need to solve some questions and we will get to know about the gap method better. हाँ जी, फटाफट जरा एग्जाम्पल 16 फटाफट शुरू करो. एग्जाम्पल 16. सबसे पहले तो हमें अरेंजमेंट निकालने हैं इंडिपेंडेंस के. तो आप सबसे पहला काम क्या करो, अब थोड़ा तेज करते हैं यार, है ना. बहुत बहुत धीरे कर रहे हैं अभी हम. अभी तक हम समझ रहे थे, अब हम समझ चुके हैं पूरा. अभी हमारे पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो नहीं आता. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो एवरी कॉन्सेप्ट. ठीक है, आई एम रिमूविंग दिस नाउ. डिड यू गाइस राइट दिस? कोई बचा है तो बता दो. गुड. तो पहली बात तो हमें वर्ड दिया गया है इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस. चलिए सबसे फटाफट आप जो भी लेटर्स एक साथ हो उनको कर लीजिए. आई एन एन एन. ठीक है, तो सबसे पहले तो एन ही लिख लेते हैं यार. जो भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनको लिखते चलते. एन एन एन. नाउ डी डी. 2 बार डी आया है, सॉरी. देन ई and one more. Now I, P, C. तो अगर हमसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो पहला क्वेश्चन था टोटल अरेंजमेंट्स. हाँ जी, आंसर करिए. So it's going to be 12 factorial by 3 factorial into 2 factorial and into 4 factorial. Correct. Now the second question is
total arrangements when first letter is P. तो क्या क्या हुआ ये, मतलब what did happen in this case? Can you like physically understand it? What is happening? Yes, Safa, please. Sir, I didn't hear what you said. I want to know whether are you understanding like what is happening in this case? Second case. No. Am I audible, Safa? Sir, your voice is breaking for me. Acha. I don't know why it is happening because my connectivity is good. So what I'm saying is, Safa, that did you understand what is happening in this case? Yeah. Like first letter is P. So what happened? First letter is fixed. Yes, first letter is fixed. You don't need to arrange this first place. You only have 11 places, 11 letters to arrange now. This is fixed. अब क्या होना चाहिए फिर आंसर? It will be 11 factorial by Yes. 3 factorial into 2 factorial into 4 factorial. Correct. Sorry. हाँ जी, थर्ड पार्ट. क्या है थर्ड पार्ट? Do all the, in how many of these arrangements do all the vowels always occur together? Okay. All the vowels are together. Tharif or Fahad, any one of you. All the vowels are together. हाँ जी, बताइए आंसर. Sir, there are 5 vowels. 5 vowels. There are 4. There are 5 vowels, yeah, correct. Yes, so then there are 7 remaining objects, so we can take them as 8. Yes. Then there are 3 n's and 2 b's, so then we can take them as 8 factorial divided by 3 factorial 2 factorial. Correct. And then don't we need to arrange these as well? Yes, sir. So that e and I can be written as 5 factorial by 4 factorial. Correct. Very good. So 8 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial into, this is just the arrangement when we take all the vowels together, and this is the arrangement of these vowels. Arrangement of vowels. And this is arrangements of all objects. Okay, fourth part is, do the vowels never occur together? So what should be the answer for fourth part? आपके सामने लिखा हुआ है आंसर. Just tell me the answer directly. फहद, फोर्थ पार्ट का आंसर बता. फहद बताएगा फोर्थ पार्ट का आंसर. Am I audible, guys? Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible. अच्छा, ओके. फहद सीधा सीधा ही आंसर है, यहीं पे बता सकता था चैट पे. फर्स्ट माइनस थर्ड. भाई फर्स्ट क्या कह रहा है? ऑल टोटल अरेंजमेंट्स. थर्ड क्या कह रहा है? ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर. व्हाट डू वी वांट? वी डू नॉट वांट ऑल द वोवेल्स टुगेदर. तो टोटल अरेंजमेंट्स में से जब ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर हैं, वो सारे आप हटा दीजिए. तो ऑल द वोवेल्स विल नेवर बी टुगेदर. अच्छा, फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ में बस आई और पी दोनों फिक्स कर दिए, फर्स्ट वाला भी और लास्ट वाला भी. ये फिक्स है. बीच के 10 को अरेंज करना है आपको.
The remaining 10 letters needs to be arranged. So how we can arrange them is 10 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial into 4 factorial. Right? That is how we can solve these questions. And now please guys solve 7.3, 7.4 miscellaneous and ask your doubts. Also solve miscellaneous examples. You will be seeing a lot of questions from miscellaneous examples and miscellaneous exercise in your examination paper. Just remember this, okay? So solve in every chapter, you need to solve miscellaneous examples and miscellaneous exercise. Without them, you will not be having the proper knowledge of concept. Solve these. Right now, I will be asking you one question in which there are 2 parts. Okay, now try to solve them, and also try to identify whether you need to apply combination or arrangements. Sir, we need to apply what? Try to identify whether you need to apply combination or arrangements, permutation. Okay, there are 20 students in a class. Anji, first question. The first question, the question is, okay, there are 20 students in a class. We need to make a committee of 7 students, right? Now, the first part is 2 given students. Let's call them A and B. So A and B will always be in committee. That is the condition. Okay. They will always be in committee. And second situation is, let's say there are 2 other students, C and D. They will never be in the committee. C and D will not be included in the committee. Okay. So you need to answer these 2 parts, right? Try to solve first part. बहुत ही direct answer है, कोई बहुत बड़ा concept नहीं, बस एक concept है छोटा सा. If you have solved question number 8 and 9 from exercise 7.4, so you would be able to solve them like in a jiffy within 5 seconds. तो बट उससे पहले आप मेरे को ये आंसर करिए कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है? So combination. Yes, correct. We do not need to arrange these people. हमें फर्क नहीं पड़ता कमेटी में कौन पहले आया कौन बाद में आया. बट हाँ, अगर मैं आपसे ये बोल देता कि कमेटी के अंदर एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, 5 मेंबर्स हैं, तो तब अरेंजमेंट मैटर करता है, राइट सर? क्या? Then it would have been a question of permutation. तब अरेंजमेंट हमारे लिए मैटर करता. तो जब भी कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे पुट करना है तभी अरेंजमेंट मैटर करेगा, अदरवाइज कॉम्बिनेशन से काम हो सकता है. तो पहले क्वेश्चन में हम 2 लोग हमेशा कमेटी के अंदर होंगे. पहले मुझे एक छोटे क्वेश्चन का आंसर दो, भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए इन 2 कंडीशन को. अगर मुझे 20 स्टूडेंट्स से 7 स्टूडेंट्स की कमेटी बनानी है तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे? So you want the final answer? No. I just want a simple answer. If there are 20 students,
and I need to make a committee of 7 students. How many ways to do that? 20C7. 20C7, correct? But now the situation is something like this, that there are 2 students which always needs to be in the committee. These are 2 very important persons. They will always be in the committee. So what happened? What changed? Like, how do you comprehend this situation that there are 2 students who will always be in the committee? It means that, yeah, Safa, please. I'll tell the answer, sir. Yeah. Is it 18C5? 18C5, correct? Students are always chosen, so we will Yes. exclude them from those total 20 students and even from the committee of 7 students, because Correct. they're always Correct. True, chosen. Safa. Good. Safa told the reason very specifically, that there are 7 students which needs to be chosen, but we have already chosen these 2 students. So now we have to choose 5 students only from the remaining 18 students. As there are 2 students who are already in the committee, so we are left with 18 students in which we need to select only 5. As 2 students are already in the committee. Okay, the second case. Number of ways in which 2 given students are never in the committee. They will never be chosen. Kharif, will you try? Yes, sir. Yeah. So if 2 students will never be in the committee, what did this imply? What does this imply, Kharif? So then it will be 20C7. Not 20C7, 18C7, no? So 18C7. Because we are left with 18 students, 2 will never be chosen. So the total choices are 18, in which we need to make 7 choices. Okay, let's solve this. Let's say there are 2 students, A and B, in this, and there is a situation, there is a condition that if A is in the committee, B will not be chosen. Just solve this. If A is in the committee, B will not be in the committee. अगर A committee के अंदर है, तो B नहीं होगा. This is your last question for today. Can you comprehend this with me? Tell me, what are you thinking? Whatever you are thinking, just explain it to me first. What is the main condition here?
हम बोल रहे हैं अगर ए कमेटी के अंदर होगा तो बी नहीं होगा, तो व्हाट इज द मेन कंडीशन? मेन कंडीशन इज दिस कि ए होगा कि नहीं होगा। अगर ए होगा, so there are two ways in which this can be done. This condition can happen. या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा। A is in committee, A is not in the committee, right? अगर A कमेटी के अंदर होगा तो B नहीं होगा, right? तो अगर A कमेटी के अंदर है तो इसका मतलब हमारे पास 7 लोगों की कमेटी थी, अब बची 6 की। We need to only select 6 people out of Safa. Will you answer this? We need to select 6 out of solve the first case. If A is in the committee, then how would the procedure happen? Tharif, will you try? Yes, sir. If A is in the committee, then what is the condition? So can we divide the 20 classes like Yeah, how Tharif? Try. Don't worry about the background noise. Okay. yes, You sir. just So can we divide them like 10 for class A and 10 for class B? 10 for A, 10 for B. No. I did not understand what you are saying. Please explain again. There are 2 persons. For Tharif, A and B are 2 persons. So what we are Yes, sir. saying is if A is in the committee, B will not be in the committee. So if person A is in the committee, person B will not be in the committee. So we have divided the whole condition into 2 parts, because the main condition is whether A is present in the committee or A is absent from the committee. So let's say for now, A is present in the committee. Then how would the procedure happen? Safa, you can also explain. Yeah. So you were saying something. I actually couldn't hear you, so I just left the meeting. Yeah, please. Explain. You can. I want you to solve the first condition. If A is in the committee, how would the procedure happen? We will take consideration of members present in A committee, right, sir? Yes. Yes, Safa. Yes, if you can hear me. You're not audible to me. Am I audible, Safa? Okay, guys, am I audible? Hello. Yeah, sir, you're audible. Yes, Safa. But you were not audible actually at that Can you time. hear me? Sir, Yeah, can you I can hear you. Now I can hear you.
Safa, I can hear you now. If you want to explain the question, please. Yeah. Sir, I really don't know how I can put it in words. Like previously, You just tell me the answer, whatever you are thinking. Tell me the answer, the sir, I mathematical don't answer. think so. My answer is correct. I think it's wrong. 1. Oh, no, not 1. Okay, okay. No, not 1, Safa. Yeah, I am listening to you. Okay, so let me comprehend you. Let me comprehend the situation for you guys. If A is in the committee, then what will happen is B will not be present in the committee. So you have 20 persons, out of which A has already been selected, right? And B will not be there. So you are left with 18 choices. You have 18 more persons other than A and B, in which you have to select only 6. Did you guys understand this? If A is in the committee, B will not be in the committee. Hence, we are left with 18 choices other than A and B, out of which we just need to select 6. So the first situation is when A is present in the committee, B will not be in the committee, and we have to select 6 persons out of 18. Now, when A is not in the committee, then B can be or can be either B is present or B is not This present. committee. Like I can't understand this committee. I mean, how you took 18C6. 18C6 is Safa. See, if A is in the committee, can you hear me? Okay. If A is in the committee, then B will not be in the committee. Yeah. Right? So when A is in the committee, so there were total 7 students in the committee, but क्योंकि आपने A को already select कर लिया है, तो you have to select 6 more people now. Yeah. Out of 18 why? क्योंकि A तो already select हो चुका है, और जब A होगा तो B select नहीं होगा, यानी कि A और B दोनों को हटा दीजिए अब आपके पास total 18 students बचेंगे, in which you have to select 6 to form the committee. Am I correct? Yeah. Okay. When A is not in the committee, then we don't know about B. We are not saying that if A is not in the committee, then B will be in the committee. No, the reverse is not true. We just said that if A is in the committee, B will not be in the committee. What if A is not in the committee? We don't know. B may or may not be present in the committee. We don't have any condition for this case. We just have the condition for first case. तो जब A committee में नहीं होगा, then what? Then we are left with 19 choices, because B can also be included, right? So we are left with 19 choices, out of which we have to select 7. Sir, in the second case, B may or may not be. Yeah. B may be or B may not be. There is no condition on B. Actually, there is no condition on second case. And So so if both A A and B put the committee. no, Be the this normal. cannot happen. This cannot happen. A and B both cannot be in the same committee. If A is in the committee, then B is not in the committee. But if A is not in the committee, then B may or may not be in the committee. Yeah. So the total answer is 18C6 plus 19C7. Why? Because there is a or. या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो काम ऐसे हो सकता है या तो काम ऐसे हो सकता है. That is why the addition between, I mean adding both these choices. That is the answer. अभी आप सारे क्वेश्चंस लगाइए पीएनसी के, जो भी आपके डाउट्स हैं. नेक्स्ट क्लास में हम डाउट्स लेंगे, देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर.